बेटा स्टार्ट कर ले चल सीधा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा the value of g reduces to half half of its value at surface of earth at a height h. Then h is equals to dash. The value of g reduces to half of its value at the surface of the earth at a height how much beta h. Then find the value of your h is asking. Anyone? G at a certain height, what is the formula beta? G is equals to G at a certain height is equals to G divided by 1 plus h divided by r whole square. G at a certain height is how much for me? Half of the G on the surface of the earth. So it is your G divided by 1 plus h by r whole square. So this G gets cancelled. If I simplify it, 1 plus h by r whole square is equals to 1 by 2. So that means it will be equal to your 2 here. That means 1 plus h by your r will be equal to your root 2. So h by r will be equal to root 2 minus 1. So ultimately I can write h is equals to root 2 minus 1 into r. So this will be the height. Done better? Sure. Next question देखिए बेटा. Potential energy of a 3 kg body at the surface of a planet is minus 54 joules. Then escape velocity is how much? Then escape velocity will be dash. Anyone? Potential energy of the body दे रखा है बेटा on the surface of the planet. Then escape velocity पूछ रहा है. You know that sum of your kinetic energy plus potential energy must be equal to 0 for escape velocity. I told you already, isn't it? So kinetic energy is half into m into your v square plus potential energy is minus 54 joules. That must be equal to 0. So this is your half into mass is given as of your 3 into your v square. Then this will be equal to your minus 54 is equals to 0. So this is your 3v square divided by 2 is equals to 54. 6 meter per second, sir. Answer. How much? 6. Yeah, 6 meter per second. Okay. क्योंकि कितने में जाएगा बेटा? 3 1s are 3 8s are. तो v square is equals to ये हो गया 36. तो v हो गया root 36. Root 36 is nothing but 6 meter per second. Yeah.
Done, sir. This is your energy and this is your distance r. एक ग्राफ ऐसा दे रखा है बेटा. Another graph is given like this and another graph is given like this. What does this all represents बेटा? एनर्जी का ग्राफ. ये कौन सी एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, सो ये होगा टोटल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी उससे भी नेगेटिव होगा तो और नेगेटिव के एच. ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव रहता है ना बेटा. डन. Yes, sir. Next question. A satellite of Earth of mass m is taken from orbital radius 2r to 3r. Then minimum work done is a satellite of Earth of mass m is taken from the orbital radius 2r to your 3r. Then minimum work done will be equal to your how much? ये अर्थ है, ये रेडियस कैपिटल आर, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम. सो यहाँ पर अपने पास एक सैटेलाइट है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी हाइट पे है बेटा? 2r. तो अब ये यहाँ से यहाँ तक गया which is a distance of your 3r from the surface of the earth. What is asking is work done. Work done are change in potential energy. So the minimum work done will be equal to how much? देखो बेटा, total initial energy plus the work done must be equal to your total final energy. Initial work done is right now what beta? Minus of capital G capital M small m divided by 2 into your 2 times of your radius h plus r, isn't it? At a certain height plus certain amount of work done will be equal to, from surface ले रहा हूँ बेटा, minus of capital G capital M into your small m divided by 2 into your 3 times of your r. So work done will be equal to how much? Work done will be equal to, this is minus of your capital G capital M small m divided by 2 3 is 6. This is 6r. This minus will go here, so this will become for me plus capital G capital M small m divided by 4 times of r, isn't it? Take the LCM for this one. So if I take the LCM for this one is 12r. So this will become for me 2 times of capital G capital M small m plus this will be for 3 times of capital G capital M small m. So that will be equal to how much beta? Minus 2 plus 3. How much? Capital G capital M small m divided by 12r. 12r. This will be the answer. आ गया बेटा? Yes, sir. Sure. Next one. A geostationary satellite. Geo means Earth. What is the time period for the Earth beta? 24 hours. तो geostationary का भी time period कितना होता है? 24 hours. Geostationary satellite is orbiting the Earth
एट ए हाइट मान के चलो 5r above that surface of earth, capital R. R is what beta? Radius of the earth. The time period of another satellite in hours at a height of 2r from surface of earth, from surface of earth. तो कितना आ रहा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? प्लस थर्ड ला. फर्स्ट रेडियस कितना है बेटा? फर्स्ट रेडियस कितना है? r1 is equals to capital R plus h. So it is your r plus h की वैल्यू कितनी है? 5r. तो ये हो गया मेरे पास 6r. r2 will be equal to your r plus of your h2. ये h1 था initially. So it is r plus ये कितना हो गया? 6r. तो ये कितना बन जाएगा? 2r है ना? सॉरी, ये 2r है. 3R. ये 2r है, तो ये हो जाएगा 3r. तो r1 and r2 आ गया मेरे पास. So time period is t square is directly proportional to r cube. So t1 by your t2 whole square is equals to r1 by r2 whole cube. So geostationary का time period कितना होता है बेटा? 24 hours. अपने को t2 निकालना है. t2 whole square is equals to r1 is equals to 6 into r divided by 3 into r whole cube. ये r चले गया. आया सभी को? 3 1s are 3 2s. Yes, sir. isn't it? So अगर स्क्वायर निकालो यहाँ से तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ योर t2 is equals to your, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ योर होल क्यूब. ठीक है ना? बराबर है लिखा. 24 by t whole square is equal to 8. तो t2 will be equal to your how much वर्ग? Yes sir. Sir, वो 12 by T2 क्यों लिखे आप? 24 by T2 आता है ना सर? So this one will be 24 by your t2 का whole square. t cube मतलब ये कितना हो गया? 8. So t2 will be equal to 24 divided by, ये कितना आ जाएगा? √8. होता है ना? डन बेटा. तो कितना बनेगा? 12 by √2 into √2 by √2. तो ये बन जाएगा मेरे पास √2 into √2 is 6. 12 by 6 is 6 √2. आ गया? Yes, sir. चलो. कंपलसरी एक बार PYQs निकाल के करिए बेटा. Done, sir. चलो.
Next question. The escape velocity from the Earth is 11.2 kilometer per second. The mass of another planet is 100 times of mass of Earth, and its radius of Earth is 4 times, sorry, and its radius is 4 times the radius of Earth. तो उसकी escape velocity क्या है? The escape velocity of the planet is, ट्राई करिए डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन में. escape velocity on the earth तो मेरे पास है 11.2. उसने क्या बोला? The mass of another planet is 100 times the mass of Earth. Mass of your planet is 100 times the mass of your Earth, and radius of your planet is 4 times the radius of your Earth. तो escape velocity कितना हो गया? V is equals to under root of 2 times of g mass of planet divided by radius of planet. That is equals to under root of your, you get 2 times of capital G, mass of planet is 100 times the mass of Earth, divided by radius is 4 times of your radius of Earth. तो कितना बनेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम ई बाई रूट ई, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 times of your capital G M E divided by your R E into रूट का 56 ये बनेगा 4, ये बन जाएगा 25. रूट 25 कितना होता है? 5. हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GME R. आंसर 56 है सर. हाँ बेटा 56. 11.2 हो गया into your 5. So 11.2 into 5 कितना होता है बेटा? 56 किलोमीटर पर सेकेंड. Done. डन सर. What will be the gravitational potential energy बेटा? कहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, कोई बता सकता है? The gravitational potential energy is maximum at where? Infinity, Earth surface, center of Earth, twice the radius of the Earth. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होता है? इंफिनिटी के पास. Gravitational potential energy is maximum at infinity. और जीरो भी वहीं होता है बेटा, and also zero at the same position.
सुबह की क्लास में तो कोई आने के लिए रेडी ही नहीं। डन सर। चलो, two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is zero. Where the gravitational field is zero is dash. Right, करी? Two bodies of masses of कितना m and as well as of your 4m are placed at a distance of r. ये हो गया m और ये हो गया 4m are kept at a distance of your r. Okay, so the gravitational potential at a point on the line joining them यानी somewhere यहाँ पर मान के चलो at a distance x gravitational field कितनी होती है जीरो, तो ये बनेगा r minus x. Okay, so the gravitational field at a point मान के चलो पॉइंट P है, यहाँ पर अपने को जीरो हो रहा है, ठीक है ना. तो पूछ रहा क्या वहां पर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो पहले x निकाल लेते हैं जहां पर ये जीरो बन रहा है. तो g इंटू योर m डिवाइडेड बाई योर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर g इंटू योर 4m डिवाइडेड बाई ये बनेगा मेरे पास r माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो ये gm और ये gm गेट्स कैंसिल. So it is your 1 by your x square is equals to 4 divided पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाने का है सर यहाँ पर. whole square. 9 times आएगा बेटा, 9 times of gm by r. नो सर, नल पॉइंट का आप ये फॉर्मूला लिखाए थे तो वो अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, वो अप्लाई कर सकते डायरेक्टली. x is equals to under root of your m2 by your root of your m1 plus of your m2 दो डिवीज कर ले सकते. तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, x कितना निकलेगा यहाँ पर देखो, x square is equals to ये उधर चले जाएगा बेसिकली ऑल द फोर टर्म्स. सो स्क्वायर कर दो, दिस विल बिकम फॉर मी x. यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ इसको, x वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 2 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा बेटा 1 by your x is equals to your 2 divided by r minus x. तो ये हो गया 2x is equals to r minus x. बन गया. टू r by 3. So x is equals to your r by 3. तो x is equals to r by 3 के पास अपने को नल पॉइंट मिल रहा है. तो पोटेंशियल पूछ रहा है. So what will be the potential? Potential का फॉर्मूला V is equals to minus of G into your M divided by r. और यहाँ पर क्या होता है x, isn't it? यहाँ पर अपने को पोटेंशियल x के पास ही निकालना है ना, पॉइंट P के पास. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस 3gm माइनस ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई वर कितने पार्टिकल्स है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m. तो पहले पूरा पोटेंशियल निकालो ना इसका,
पूरा पोटेंशियल निकालो दोनों के लिए, बिकॉज सम ऑफ होता ना, यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना पोटेंशियल आ रहा है पहले ये देख लीजिए। Potential at P will be equal to your minus of G into your M divided by your पूरा डिस्टेंस, ये पूरा क्या कितना फोन बनेगा बेटा? कितना आ रहा? Point P will be equal to minus G, x is equals to R by 3. This is minus, this is 4G into your M divided by R minus x कितना आएगा देखो बेटा, R minus x की वैल्यू है R by 3, फिर कितना बनेगा? minus 15 GM by R. मैं होता R minus R by 3 कितना आ रहा है? 2R by 3. So ये हो गया 2R divided by 3. तो ये बन गया पोटेंशियल एट पॉइंट P will be equal to your minus of 3G into your M divided by R minus this will be equal to your 3G into your 4M divided by 2R. तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कैपिटल G एंड M डिवाइडेड बाय अगर R ले लिया, सो दिस विल बिकम फॉर मी, यहाँ पर 2 1s ये 2 2s में चले जाएगा तो इट इज 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 3 आ जाएगा, 3 3s 9. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 9G into your M डिवाइडेड बाय R, माइनस 9 आएगा. Understood, sir. Next one. If a graph is plotted between T square and R cube for a planet, then its slope will be, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग, T इज इक्वल से कितना होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर R क्यूब डिवाइडेड बाय योर कैपिटल G कैपिटल M. तो टी स्क्वायर का ग्राफ निकालना है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा R क्यूब डिवाइडेड बाय G इंटू योर M, ठीक है ना. सो नाउ इक्वेट इट विथ योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इज इक्वल्स टू योर M इंटू योर x प्लस C. तो C तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो C यहाँ पर 0 हो गया, और x की जगह क्या होना चाहिए अपने को R क्यूब. स्लोप की जगह क्या आ जाएगा देखो बेटा, स्लोप की जगह आ जाएगा a वैल्यू, m की जगह ये आ जाएगा. सो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ समथिंग लाइक. तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस विल बी टी स्क्वायर वर्सेस योर आर क्यूब का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन. सो ये बनेगा स्लोप. सो थीटा विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, देयर इज नथिंग बट ऑफ योर स्लोप m, that will be equal to your tan theta. So tan theta will be equal to your
कितना बन रहा है देखो, स्लोप कितना आ रहा है बेटा, कंपेयर करो, m इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G इंटू योर m। तो ये बनेगा मेरे पास 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू m। सो मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू m, या थीटा लिख सकते हैं आप tan इनवर्स ऑफ योर 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू m। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance. Then the time period of a planet in circular orbit of radius capital R around the sun will be. First option is R to the power of n plus 1 divided by 2. Next one is R to the power of n minus 1 divided by 2. Third one is R to the power of n. Fourth one is R to the power of n minus 2 divided by 2. चलो ट्राई करो। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज nth पावर बोल रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर r to the power of n. So if I remove the proportionality constant, F is equals to K by R to the power of n. Okay. So then the time period पूछ रहा है, तो time period का formula देखो बेटा, as it is moving in a circular path, F value will be equal to your m into r into your omega square is equals to K by R to the power of n. That means omega square is equals to 1 by some proportionality constant if I am taking. So it is K divided by m into, this will be equal to how much beta? R into R to the power of n. That means R I can take common right now there. So it is your omega square is equals to some constant K divided by m R to the power of 1 plus n. I can write like this. That means I can say that omega is proportional to 1 by R to the power of your 1 plus n divided by 2. पावर जा रहा है ना बेटा, पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं बेसिकली। Yes, sir. तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई योर ओमेगा। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा बन जाएगा, तो सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर ऑफ 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा मैच हो रहा है बेटा? First option. First option will be the answer. Done. Yes, sir. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा, बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? Binding energy is nothing but beta the energy due to which the system is completely bound, isn't it? So binding energy of the satellite अगर मैं बात कर रहा हूँ in one word, binding energy is always equals to negative of your total energy. Okay, so negative of your total energy मतलब that will be equal to your half into your m into your v naught square, yeah, that will be equal to capital G capital M small m divided by 2 into r. That will be equal to your L square divided by 2 into m into your r square. L is your angular momentum beta. So angular momentum of this one will become for me L is equals to your orbital velocity into your r. तो ये हो गया मेरे पास m into under root of g into your m divided by r into r. Okay.
So ultimately binding energy is what? Negative of potential energy. Binding energy is equals to negative of total energy. तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनी बेटा? ये माइनस, ये अपने को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस आके यहाँ पर प्लस आ जा रहा बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना बनेगा मेरे पास? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। बात समझ में आई? यस सर। बेसिक कंडीशन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। Next. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. So to what approximate radius would Earth have to be compressed? Earth had to be compressed ट्राई करो इसको। एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूले से जाना है सर इसको। हाँ देखो क्या बोल रहा है, टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू एस्केप, यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के वेलोसिटी को ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से इक्वेट करना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना बेटा, v is equals to under root of your 2 times of capital G(m)/r। ये एस्केप वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करना है। c is equals to under root of 2 times of capital G capital M divided by r। तो ये कितना बनेगा? c square is equals to 2 times of capital G capital M divided by r। तो रेडियस r will become for me 2 times of capital G capital M divided by c square। c की वैल्यू मालूम है, c is 3 into 10 to the power of 8। एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम है बेटा, मास ऑफ अर्थ भी देना चाहिए आप लोग को, otherwise doing this will be not possible। anyhow g की भी वैल्यू मालूम है अपने पास, g वैल्यू है 6.6 into 10 to the power of -11। अर्थ भी देना है, अगर दिया तो you can substitute the values here and get the answer for this one। आ गया? मास क्या सब्स्टिट्यूट करना सर? अब मास ऑफ अर्थ देना पड़ता बेटा उसको, अभी तो यहाँ पर दिया नहीं है उसने, लेकिन you should be giving the mass of the earth, वरना करना मुश्किल हो जाएगा।
फॉर्मूला याद रख लीजिए, काफी है। escape velocity का अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हाउ डू यू डू द प्रॉब्लम फॉर दैट? escape velocity को वेलोसिटी ऑफ लाइट से इक्वेट कर लेके ट्राई टू कंप्लीट द प्रॉब्लम। डन? ओके सर। चलो, अगर इवनिंग पॉसिबल है तो आई विल कम इट बेटर, अदरवाइज आप लोग वर्किंग करते रहिए, सारे लोग रहेंगे तो यू कैन ट्राई टू कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन हो गए, न्यूमेरिकल्स और थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।